As in the last video, we have discussed about the base quantities and dimension. Now in this video, we're gonna be discussing about the derived quantities. Okay, derived quantities, derived quantities and their dimension, right? So the first derived quantity that could be, I guess, yes. First, we're gonna see about speed, right? Speed, or you can say velocity, right? And now we'll see. We know that speed and velocity is two different quantities, and we'll see that. So if we talk about the formula of speed, so we have the formula v is equal to distance अपॉन टाइम, ठीक है. और अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं. तो हमें पता है डिस्टेंस का हमारे पास यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है, मीटर होता है. और लेंथ का क्या होता है, मीटर का क्या होता है, हमारे पास लेंथ होता है. टाइम का हमारे पास क्या होता है, कि टाइम की डायमेंशंस लिख रही हूँ मैं, ठीक है. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी होती है और डिस्प्लेसमेंट की होती है लेंथ, ठीक है. तो फिर डिस्प्लेसमेंट का मीटर हमारे पास मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास मीटर होता है. और मीटर की जो डायमेंशन होती है हमारे पास लेंथ होती है, मीटर लेंथ में ही आ जाती है क्योंकि मीटर लेंथ का यूनिट है, ठीक है. उसके बाद जब हमारे पास नीचे वाली वैल्यू है, तो फिर नीचे वाली वैल्यू जब हमारे पास ऊपर जाती है तो ये माइनस के अंदर हो जाती है. तो एल टी -1, सही है. सो ये ऐसे है. हेयर इज़ द डायमेंशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी. अगर हम इसको प्रॉपर करेक्ट वे के अंदर अगर हम इसको बताएं तो हमारे पास ये प्रॉपर जो आएगी, जस्ट वेट अ मिनट, ये हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी की हमारे पास सिर्फ डायमेंशन आ गई, सही है. अब अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर डायमेंशन की, सही है, हम इसकी प्रॉपर डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है. हम इसकी प्रॉपर डायमेंशन की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास है एम एल टी. एम हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास एम क्या हो जाएगा, 0. एल हमारे पास है, परसेंट है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास 1 आ जाएगा. और उसके बाद हमारे पास टाइम भी मौजूद है जो कि है -1. तो ये हमारे पास है प्रॉपर डायमेंशन. डायमेंशन एक्चुअली पावर्स को कहते हैं, सही है. तो ये हमारे पास एक डायमेंशन आ गई. नाउ इफ़ यू गोना लुक एट इन अदर फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, दैट इज़ एक्सेलरेशन, ठीक है. तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन के अंदर हमारे पास आ जाएगा, लेट्स टेक अनदर नंबर, पिंक, ओके. सो हमारे पास एक्सेलरेशन, अगर हम एक्सेलरेशन लिखें, ठीक है, एक्सेलरेशन के हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, v इज़ इक्वल टू टी, ठीक है. अब हमारे पास वेलोसिटी का क्या था, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आती है, हमने अभी अभी देखी, एल टी -1, ठीक है. और उसके बाद जब अगर हम बात कर रहे हैं टाइम की, तो हमारे पास टाइम की क्या है, टी है. अब जब टाइम ऊपर जाएगा, व्हेन इट विल गो, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, सही है, ठीक है. अब यहाँ पे जैसे टाइम है, टाइम हमारे पास ऊपर गया, टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम इनवर्स हो जाएगा, ओके. तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ठीक है. तो हमारे पास टाइम की जो डायमेंशन आएगी, देयर विल बी एल टी -2. एल टी -2 हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी, ओके. उसके बाद वी हैव हमारे पास अनदर डायमेंशन है, वो है हमारे पास, उसको हम कहते हैं फोर्स, सही है. अब हमारे पास फोर्स की क्या डायमेंशन होगी भाई, तो हम फोर्स का यूनिट देखते हैं. फोर्स इज़ इक्वल टू F इंटू MA, सही है. तो हमारे पास अब हमें पता है कि M हमारे पास होता है, मैस होता है हमारे पास. मैस की क्या होती है, कैपिटल 1 होती है, कैपिटल M होती है. और एक्सेलरेशन की हमने अभी भी देखी है, एक्सेलरेशन की थी T -2. तो ये हमारे पास फोर्स की आ गई, ठीक है. नाउ वी गोना सी वर्क.
राइट। अब हमारे पास एक और ड्राइव क्वांटिटी है जो क्या है वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डी। ओके, अब हमने देखा हमारे पास फोर्स, सॉरी इट इज़ इट इज़ डी, सो डी है हमारे पास। अब नाउ अगर हम देखें कि हमारे पास फोर्स की क्या आएगी, तो हमने अभी देखा दैट वी हैव सीन, sorry, we have seen that we have the dimension of force, that is m l t minus 2. Then we have displacement over here. We'll multiply displacement and we know that the meter of the unit of displacement is meter, right? And length is the unit of meter, right? So length आ जाएगी हमारे पास. So this will be if we multiply this, so it will be m l square minus t, because we have 2l, right? So minus 3, we have this, the dimension of work, m l square minus t square. Now we're gonna look at the dimension of area, right? हमारे पास एरिया क्या आएगी. नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एरिया इज़ लेंथ इनटू विड्थ. सो वी नो दैट लेंथ की डायमेंशन हमारे पास लेंथ थी और विड्थ भी हम लेंथ को ही कहते हैं. तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ स्क्वायर. सो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ एरिया, राइट. देन वी हैव another, that is pressure. Now pressure is equal to force into area. Okay, now we know that the force dimension was m lt minus square, right, upon area. We have area, area dimension was l square, right, l square. So if we cut this one l with this one l, so the only one l remaining, one l would be remain. Okay, and that l will be going upside. Sorry, this is not l because the l is like end here. Now we're gonna see that, sorry, we have l, no l, what I'm doing, the hell, only t is remaining, right, and here down l is remaining. So when it go up, we know that the reciprocal of the down value is converted into minus, right. So then m t minus 2, and we have l minus 1. So this is the dimension of area, right? I hope you're getting it. Now we're gonna see the dimension, a very different value that has the dimension, no dimension, right? So we have strain. Let me just write it properly. Change the color. Yeah, we're gonna see neon one, use neon one. Now we have strain. Oh, it does not change. So strain, the unit, the formula of strain is delta. Actually, this in physics, this is not called delta. Basically this is the fractional unit of length. Okay, this is not called delta. So can you please mark it? Length, we know the dimension of length is l upon l. L cancel each other and there is no dimension. There are many of the quantities which have no dimension. For example, cycle, we have cycle, and I'll tell you that in the next video. We'll make another video of no dimension values, no dimension quantities, right? So now we're gonna see that in the previous video I told you that the quantities which have same units will have the same dimension. Now we're gonna see the dimension of torque, right? Let me change the pen now, and we'll use a green one. Now, yes, now we have the dimension of torque. Torque is equal to R into force dash. Now here R is the distance, radius,
which have meter. Then this force is ml. Let me write the formula of this. We have this, the whole dimension of r is equal to this. Then if we multiply this with ml t square, we know that this is the dimension of force, right? So if we multiply this, so we know that the dimension would be let me just do it. So if we multiply this, so we have m, then l square, and we have t minus 1, right? So can we say that this dimension is related, is, yes, this dimension is related to work. Let me show you that we have the same dimension of work as well. Can you see it? Yes, because we know that work, the unit of work is n into m, because force newton, distance meter. Then if it comes to torque have, r is m, and force is newton. Again, these both have the same units, that is why we have same dimension, as I told you before, right? So this was it.